Hi everyone, I hope that you are doing well and fine. So recently I asked 12th graders ki list out all your problems and I'll give you the solutions, because to be honest 7 months is really very much enough in order to score more than 95%. And I got so many DMs from like 12th graders and people who are giving boards, even 10th graders, and so many YouTube comments in the previous videos, so I decided to make a video on this topic too. So I'll just address each and every question that I've got, and I'll also try to improvise the things which I want to say so that you all can really score good marks. And to be honest, 7 months is really necessary. It's quite a good span of time for you in order to score more than your own potential. And yeah, why do not unleash your own potential in this 7 months? So let's just get started. So I have the questions right here and I'll try to answer them. So the first comment is, tell us your daily schedule that you started following in September as mentioned in one of your videos. Okay. So by the month of September, September is actually a crucial month for you guys, because first term abhi complete hua hai and you have just got your results, and maybe those results are satisfactory, maybe those results are not satisfactory. तब क्या करना चाहिए? To be honest, despite scoring कितना भी marks, please do not get unmotivated या फिर extremely motivated, because first term में your full syllabus is also not covered, so it doesn't matter कि तुम्हारा कितना marks आया है या फिर कैसा भी हुआ है. So first term really doesn't matter, पहला बात तो. Second बात मैं बोलूँगा कि like school में I had regular schooling, तो like मैं एब्सेंट किया था, बट इट वाज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर के लास्ट में से स्टार्ट किया था. सो सितंबर अक्टूबर आई वेंट टू स्कूल प्रॉपर्ली. नवंबर में तो स्कूल वाज टिल नवंबर, फिर दिसंबर में बंद हो गया था. So I would say, make sure you are studying practical subjects like accounts or like maths daily, because practical subjects need your consistent effort. अगर आप daily नहीं कर रहे हो, there are possibilities कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा from those subjects. Theory is a subject कि आप अगर एक दिन पहले भी, if you are like revising stuff and going and vomiting your answers in your paper, you can really get good marks in theory. But that's not the case in practical subjects like accounts and maths. So I would say at least dedicate daily for accounts and maths. Accounts and maths को at least daily 2 hours देना चाहिए. Moreover, I would say कि उसके साथ ही make sure you are doing simultaneously एक theory subject एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है. फॉर इंस्टेंस इफ आई एम डूइंग कॉमर्स आज, आई वुड डू इकोनॉमिक्स टुमारो. ऐसे क्या होता है, देयर इज नो प्रेशर इन टू मी, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ स्टफ इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. मोर ओवर, इफ यू आर कंसिस्टेंट राइट नाउ, ट्रस्ट मी, आप लोग को आगे जाके यू नॉट हैव टू लाइक कुछ ज़्यादा ही ऑल नाइटर्स पुल करने होंगे, जस्ट लाइक माई प्रीवियस वीडियोज आई डिड. सो अगर इफ यू आर कंसिस्टेंट फ्रॉम राइट नाउ, यू कैन एक्चुअली डू इट वेरी इजीली, ठीक है. तो अगर आप आज कॉमर्स कर रहे हो, यू कैन डू इकोनॉमिक्स कल, एंड मेक श्योर टू हैंडल छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जो रहते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश फॉर माई केस. आई वुड डू देम ड्यूरिंग द वीकेंड्स, बट ऑल्सो मेक श्योर कि आप इन सब्जेक्ट्स को छोड़े नहीं, क्योंकि इंग्लिश अगेन इन द केस ऑफ ISC इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. सो लाइक you have to include the marks of English in your percentage, and in order to boost your percentage, English के marks is a very necessary thing. So लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमेंट. तो यही था मेरा डेली शेड्यूल. मतलब लाइक आई डेंट डू एनीथिंग हेक्टिक, ऐसा कुछ कि मैं दिन में 10-15 घंटे पढ़ रहा था इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. नो, आई डू नॉट रिकॉल डूइंग दैट स्टफ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. Moreover, I would say that try to complete your syllabus by the month of December. Of course, pre-boards आ जाएंगे, and when you're giving pre-boards now, make sure that your syllabus is completed, ठीक है. And even if your syllabus is not completed, try to rush it during the month of December, ताकि the whole of January or February के starting के कुछ days can be dedicated wholly to specimen papers या फिर sample papers जो आप solve करते हैं. One thing that has really helped me during those revision period और starting से क्या था कि after doing things from the book, I would recommend a question bank, or in my case I used Arihant के question bank. To be honest, it has been a life changer for me, क्योंकि most of my syllabus is not done till the month of September. I was also starting from the month of September या फिर अगस्त से ही मैं start करा था, just because I had so many events that were around in the corner in class 12th and I didn't want to miss any of those things. तो मेरा syllabus कुछ ज़्यादा ही back हो गया था. So मैं कैसे किया था, अरिहंत का जो क्वेश्चन बैंक्स रहता है ना, दोज आर रियली रियली हेल्पफुल. उसमें आप लोग को क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे विच इज
जो अभी अभी काउंसिल बनाने शुरू किए हैं जिस तरीके के क्वेश्चन लाइक MCQs, assertion reason based questions, which you really do not get in any other textbook, any other question bank. So I would say कि मतलब उसमें समरी वाइजेस भी लिखा रहता है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके वैसा क्वेश्चंस भी रहता है. सो अरिहंत का क्वेश्चन बैंक की मैं फुल्ली डिपेंड हो गया था उसमें, ठीक है. मोरोवर क्या हो गया था कि लाइक जो रहता है उनका आंसर्स दैट इज आल्सो काउंसिल के जैसा. मतलब क्या होता है ना, काउंसिल डज नॉट वांट्स अ परफेक्ट, मतलब काउंसिल हर एक स्टेप्स हर एक लाइन के लिए मार्क्स देता है. सो बट हम लोग को नहीं पता रहता है व्हाट इज द पॉइंट जिसके लिए वो मार्क्स दे रहे हैं, कि मतलब किस स्टेप मार्किंग मैथ्स में कौन से स्टेप के लिए कितना मार्क्स एलोकेट किया जाता है, किस हिसाब से हम लोग को पेपर में लिख के आना है. सो दैट इज द थिंग विच अरिहंत रियली डज. उनके पेपर में उनके बुक में क्या रहता है कि दे हैव काउंसिल वाले आंसर्स भी, जिस तरीके से आपको मतलब यू कैन गेट इनटू प्रैक्टिस कि आप लिखेंगे कैसे आंसर शीट में. बिकॉज writing and presenting your words into the paper is one of the most crucial thing ISC में, ठीक है. Because it's only about how you present your answers. और even in the case of mathematics क्या होता था कि like even if your whole answer is right और last का आंसर wrong है तो आपको सिर्फ एक मार्क्स कटेगा, which is not the case जो आप लोग स्कूल में होता है, रेयरली होता है ऐसा कुछ. तो ठीक है, तो बट ऐसा क्या होता है हर एक स्टेप के लिए कुछ कुछ मार्क्स एलोकेट किया रहता है एंड उसके लिए यू हैव टू प्रेफर अ काउंसिल वाला आंसर शीट आंसर, ठीक है. सो दैट इज व्हाट अरिहंत में अच्छा था. फिर क्या हुआ कि मतलब जो जब टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, देन आई वुड रियली रियली मतलब जो सैम्पल पेपर्स स्पेसिमेन पेपर्स आ रहे हैं उनके बुक में, तो मैं उस पर भी रिलाई कर लेता था कि कैसे आंसर लिखना है. आई वुड सेट फॉर एग्जैक्टली मतलब जिस टाइम से बोथ स्टार्ट होने वाले हैं दैट इज 2 बजे से आई वुड स्टार्ट राइटिंग द पेपर. एंड इससे क्या होता है ना, you also know how to handle your time and how to manage your time. So that was the case for me. Moreover, Arihant का अभी एक ऑफर चल रहा है where you get the combination of books 9, 10, 11, 12 के ICSE and ISC के. So you are getting combo of books, ठीक है. आपको उस combo के साथ साथ एक tote bag मिल रहा है worth 399 rupees free, और उसके साथ ही आपको एक extra book भी मिल रहा है. So make sure you utilize this offer and make sure you check out this offer from their official website and down in the description as well. The next thing is, how did you study Macbeth? Acha, Macbeth is one thing which is like quite difficult for a lot of people, but I'm into drama, I'm into theater, if you don't know. So I kind of like thoda Macbeth wala scene. So Macbeth was one of the, like I would say Macbeth was better than poems and stories for me. So मैं क्या किया मतलब लास्ट में जब हर एक टेक्स्ट का जो था आई वुड राइट समरी और एनालिसिस एक एक लाइन का. इट्स नॉट लाइक आई वुड डू, मैंने कोई एक्स्ट्रा वो पैराफ्रेज नहीं लिया था मैकबेथ के लिए, बिकॉज हम लोग के स्कूल ने सजेस्ट नहीं किया था. इट वाज बेटर रिकमेंडेड कि आप खुद से बनाओ ताकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी उसी टाइम हो जाए, ठीक है. सो आई वुड राइट अच्छे से सारा एनालिसिस, because in Macbeth now they do not want you to give the proper summary. They do not want कि आप summary लिख दो, because summary is a thing जो expect कर सकते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट से, बट क्लास 12th के स्टूडेंट से you are expected to analyze your text अच्छे से. So make sure you analyze each and everything. यूट्यूब में यू कैन गेट अच्छे अच्छे वीडियोस जिसमें एनालाइज होंगे अच्छे से पॉइंट्स, ठीक है. मोर ओवर आजकल एआई का हेल्प ले सकते हो आप. जस्ट मैं तो एआई का हेल्प लेता था टू बी ऑनेस्ट. अच्छे से मैं जस्ट लिखता था एक प्रॉपर लाइन एंड ऑल, एंड आई वुड ask AI I ask AI to like actually give me an analysis of the whole text, ठीक है. Moreover, Shakespearean language है थोड़ा, it's kind of tough, तो make sure you are really really paying attention to Macbeth, ठीक है. And do not rely to summary. Once again I'm telling you this, क्योंकि summary is actually ऐसा चीज, summary के लिए अगर आप summary लिख के आ रहे हो तो आपको half marks मिलेगा. So yeah, that's one case. The next question is English language. English language के लिए I would say कि प्रैक्टिस फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक, कोई भी अच्छा टेक्स्ट बुक ले लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपका अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज भी हो जाएगा, ठीक है. मोरोवर उनका एक पैटर्न रहता है एवरी टाइम, उनका ग्रामर का जो रहता है दे हैव अ पर्टिकुलर पैटर्न जो रिवॉल्व कर करके वैसे ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बट सेंटेंस थोड़ा अलग फ्रेम होता है, ठीक है. आप उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करिए. मोरोवर अरिहंत में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको विच यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है. और मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द पैटर्न. अगर आप कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, डू नॉट जस्ट राइट रैंडम ऐसी कोई कॉम्पोजिशन. मेक श्योर योर कॉम्पोजिशन इज इंटरेस्टिंग. इट काइंड ऑफ
is of good presentation. Make sure you use good words in your answer. गुड वर्ड्स अगर आंसर में लिख रहे हैं आप लोग को, सो जो मेक श्योर यू रीड एसेज, ठीक है, यू रीड जो भी है, मतलब जो भी फॉर एग्जाम्पल प्रपोजल, यू रीड सम प्रपोजल और फिर उसी हिसाब से लिख के आओ. डायरेक्ट राइटिंग है, यू रीड सम ऑफ देम, उसी हिसाब से लिख के आओ. एंड दैट्स द सेम केस फॉर लिटरेचर भी, ठीक है. लिटरेचर में द आंसर इज ऑफ 10 मार्क्स, सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक छोटा सा कुछ भी आप लिख दोगे एंड चल जाएगा, नहीं. दे आर एक्सपेक्टिंग एक फुल फ्लेजेड आंसर, मतलब इट, मतलब जिसमें प्रेजेंटेबल हो जो अच्छे तरीके से. सो मेक श्योर यू रीड अ फ्यू गुड आंसर्स, तब जाके आप वैसे ही आंसर्स लिख पाओ अच्छे से, ठीक है. The next is make guidance for all the subjects of commerce, including English. Okay. I hope that I have told about English language and English literature. Now let's come to commerce. What is commerce? Commerce में I am really sad to say about this education thing, but commerce में you have to learn the keywords. ठीक है? There's no other thing. मतलब मे बी NEP जब से आया है, you have to like analyze भी करना. You do not have to just learn it. You have to analyze the whole point. जैसे कि हमारे टाइम में क्या हुआ था, पूरा आंसर्स में हम लोग को गेस करना था कि ये कौन से पॉइंट के ऊपर है, फिर वो गेसिंग के बाद वी हैड टू राइट द पॉइंट्स जो भी कीवर्ड्स था, ठीक है. सो इट्स लाइक आप लोग को सिर्फ लर्न नहीं करना है, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन योर आंसर शीट, ठीक है. Now let's come to economics. Economics is completely opposite of that thing. Concept will work for economics. Make sure you are really thorough with the concept. ठीक है, आपका अगर कंसेप्ट अच्छा है, बुकिश लैंग्वेज नहीं भी होगा, देन ऑल्सो इट विल वर्क इन योर इकोनॉमिक्स पेपर. मोरओवर इकोनॉमिक्स का पेपर इज ऑल अबाउट एनालिसिस करना रहेगा आप लोग को, एक अच्छा खासा पेपर का. सो इंटरेस्टिंग पेपर, इकोनॉमिक्स पेपर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आई वुड से. सो मेक श्योर यू आर वेरी थॉरो विद द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू मैथ्स. मैथ्स आई वुड से स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था मैथ्स के लिए, सो मैं कंप्लीट कर लिया था, बट एक टाइम के बाद मेरा मेजर चैप्टर्स बच गया था, जैसे कि प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, ठीक है. तो उसके लिए आई अगेन टुक द हेल्प ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन ओनली, ठीक है. उसका मतलब क्या रहता है, जो कंसेप्ट इजीली रहता है वो कंसेप्ट रीड करके उसके बाद आई वुड डू द सम्स ऑफ मैथ्स फ्रॉम दैट बुक इटसेल्फ. मोreover आप अगर बुक्स में देखोगे, मेन बुक्स में दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और बोर्ड वैसा हर क्वेश्चन नहीं पूछता है. बोर्ड का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे. सो लाइक उस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को हर बुक्स में नहीं मिलेंगे, और उस तरीके के क्वेश्चन मेरे को अरिहंत में मिल गए थे, जो कि आई वुड इजीली अच्छे से सॉल्व करके मैं उसको कर लेता था. सो द नेक्स्ट कमेंट इज how much hours did you study between August to March, and when did your syllabus was done, and once you are done with syllabus what you did, and during boards did you study less or more? Okay, so I would say कि boards में even though vlogs में दिख रहा है कि I have studied a lot, but to be honest boards के time I was sick most of the time, ठीक है. so vlogs में आप लोग को जितना दिख रहा है मैं सिर्फ उतना ही पढ़ता था. इट्स नॉट कि मैं एक्स्ट्रा में कुछ जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ, नो इट्स नॉट लाइक दैट. सो बिकॉज इसीलिए ना मेक श्योर यू आर कंटिजेंसीज को प्लान करके रखो कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है. सो मेक श्योर अगर आप अभी यू आर ऑल राइट, मेक श्योर यू आर डूइंग थिंग्स अभी से ही, ठीक है. अभी सिलेबस कंप्लीट कर लो ताकि आगे जाके वो प्रेशर ना बने, आगे जाके कोई प्रॉब्लम भी हो, सो यू कैन रिलाई ऑन दीज नोट्स जो आप अभी बना रहे हो, ये मेमोरी पावर जो आप अभी बना रहे हो, ठीक है. सो अभी से अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको आगे जाके इतना प्रेशर ना आए. मोरोवर अगस्त से मार्च तक आई वुड से कि आई वाज नॉट, अगस्त से सितंबर आई वाज लाइक हैविंग माय फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं. उसके बाद आई स्टार्टेड टू रश विथ माय सिलेबस, क्योंकि मेरे को था कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आई कैन गो ऑन टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स, ठीक है. once you were done with the syllabus what you did. अच्छा, आफ्टर सिलेबस होने के बाद मेक श्योर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन बैंक्स. आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू आप हर साल के 15 साल के प्रीवियस से क्वेश्चन कर लो, नहीं, बिकॉज उतने काम भी नहीं आएंगे आपको. वो सब आपको काम आएंगे तो लास्ट 4 to 5 years के ही काम आएंगे, टू बी ऑनेस्ट. मोर ओवर मेक श्योर यू आर वर्किंग विद द पैटर्न ऑफ ICSE एंड ISC, ठीक है. जिस पैटर्न में दिया है उसी पैटर्न में आप करो. मोरोवर डू नॉट स्टडी ज्यादा एक्स्ट्रा, क्योंकि बोर्ड्स विल नॉट गिव क्वेश्चंस आउटसाइड योर स्कोप ऑफ सिलेबस. सो मेक श्योर यू आर स्टडिंग जितना बोला गया है उतना ही.
ठीक है, that's the thing. The next comment is about best book for accounts. I would say मैंने there is no best book ऐसे, ठीक है, every book is good, but I would say कि जो major book है उसमें I studied टी एस ग्रेवाल का, and उसका language थोड़ा easy था I guess. और जो अकाउंट्स का पेपर रहता है ना, उसका क्या रहता है, जो क्वेश्चन पेपर रहता है, दे हैव मेड द क्वेश्चन पेपर उस तरीके से कि हम लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आए. सो मेक श्योर यू आर सॉल्विंग ऐसे क्वेश्चंस जिसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ताकि आपको बोर्ड्स में जाके ऐसा फर्स्ट टाइम दिखे नहीं वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन. ठीक है, मेक श्योर यू आर सॉल्विंग हार्ड हार्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अभी इजी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड्स लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, उसके लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था. It's not getting easier. Okay, so I guess that was all. I don't think that I have missed anything. The moment you leave, I feel down again.